नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में आप देखेंगे गुजरात के खेड़ा जनपद स्थित झिपड़ी में, जहां पर 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ है और आज इस कलश यात्रा के साथ में 4 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य स्मारक का भी यहां पे उद्घाटन होगा। बहुत सी चीज़ें होंगी। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कलश यात्रा।
ગાયત્રી પરિવારના પ્રણેતા પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ પંડિત શ્રી રામ શર્મા આચાર્યજી સ્વયં એમના ચરણ કમલો આપણા ગામની અંદર પડેલા છે. અહોભાગ્ય કહી શકાય આપણે બધા કે આ ગામની અંદર આ યુગ રૂપી, યુગ મનસી, યુગ તપોનિષ્ઠ, યુગ દ્રષ્ટા, 21મી સદી ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો નારો આપનાર એવા મહાન મહાકાલ સ્વયં ગુરુદેવ આપણા ગામની અંદર તો મિત્રો 4 દિવસ રાત્રિ રોકાયેલા છે. નસીબ માણસ છે તમે બધા. અને આવો મહાન યજ્ઞ થઈ રહ્યો છે 108 કુંડી ગાયત્રી મહાયજ્ઞ. આ યજ્ઞનો આશય છે સાહેબ નવક્ષેત્રાલ જાગરણ. વિશ્વની અંદર ચારે બાજુ હાહાકાર, પાપાચાર, અત્યાચાર, ભ્રષ્ટાચાર, વ્યાપાચાર આ બધું જ ફેલાયેલું છે. એની અંદરથી દરેક મનુષ્યને સ્વર્ગીય વાતાવરણ તરફ લઈ જવા માટે આવા 108 કુંડી ગાયત્રી મહાયજ્ઞનું આયોજન કર્યું છે. ગ્રામજનોને હાર્દિક અપીલ કરવામાં આવે છે કે સમય કાઢો, આવો. આવતીકાલે સવારે 7:30 વાગે બરાબર સ્થળ જેનું છે શક્તિ માતાના મંદિરની પાસે, ગાયત્રી શક્તિપીઠની પાસે યજ્ઞશાળા બનાવ્યા છે. એની અંદર આપ સૌને પધારવા ભાવભર્યું આમંત્રણ. આવો. મિત્રો
नार कलश सिर धारण करो आओ सीतावन लक्ष्मी नार कलश सिर धारण करो आओ कलश कलश कृष्ण जी से कलश शंकर सात समुद्र सात समुद्र એના માટેની પ્રાર્થના કરવી છે બંને હાથ ઊંચા બોલે યુગાધિપતિ મહાકાલ કી જય યુગાધિપતિ મહાકાલ કી જય પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ કી જય પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ
હવે શાંતિ પૂજની ચેતના એનું સ્વાગત કર્યા પછી આપણા ગુજરાત ઝોન શાંતિ પૂજની અંદર ભાઈ શ્રી આદરણીય દયાનંદજી છે એ સહપ્રવી નાયક તરીકે પધાર્યા છે. આદરણીય બોલીએ ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. શાસ્ત્રાનો વેદ્યસે માહિ દેવાય તં યદાયો સુસ્વાગતં અભિમાન. અહીંયા સ્વાગતનો ક્રમ પૂરો થાય છે. આગળ આદરણીય ભાઈ સાહેબને વિનંતી કે આ કળશ યાત્રા અને ગુરુદેવનો सबको आरती दिखा दे. सभी हाथ ऊपर करके आरती ले ले. એમના માટે પણ ત્યાં ભોજનની વ્યવસ્થા કરેલ છે અને બરાબર 7 વાગે આજે બરાબર જમીન કોઈએ ઘેર જવાનું નહીં, સીધો અહીંયા આવવાનું અને 7 વાગે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ વંદનીય માતાજીનો જે દિવ્ય સંદેશ છે 108 કુંડી ગાયત્રી મહાયજ્ઞના માધ્યમ દ્વારા માતાજીની જન્મ શતાબ્દી આવે છે, અખંડ દીપકની જન્મ શતાબ્દી આવે છે. તો એના માટે હવે આપણે શું કરવાનું છે એ કાર્ય યોજના અને ગુરુદેવની દિવ્ય ચેતના, ગુરુદેવનો દિવ્ય સંદેશ આપણા શાંતિકુંજના પ્રતિનિધિઓ યુગ સંગીતના માધ્યમ દ્વારા આપણને આપણા હૃદયમાં પ્રસ્થાપિત કરશે. તો આપણે બધા 7 વાગે बराबर हमारा यहाँ का छिपड़ी के लिए 5वां यज्ञ हो रहा है. इस 5वें यज्ञ में भी कुछ विशेष करने जा रहे हैं आप लोग? इसमें तो बहुत विशेष है. वो तो हुआ, बाकी ये कोई अलौकिक है. हमारा ये यज्ञ अलौकिक होगा. डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी किस चीज का उद्घाटन करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में? हाँ, चिन्मय जी आएंगे तो जो स्मारक बोर्ड में रजत जयंती महोत्सव के बाद डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को मिलने गया था, तो वो टाइम उसमें उन्होंने पूछा था मुझे कि गुरुदेव सारे हिंदुस्तान में घूमे हैं, सभी जगह एक रात एक दिन एक रात एक ही दिन ठहरे, तो छिपड़ी में 4 दिन क्यों? मैं कहती तो मैं भी नहीं जानता. तो डॉक्टर साहब ने बोला गुरुदेव जहाँ ठहरे थे उसको स्मारक बना देना, एक दिन ये तीर्थ बन जाएगा. अच्छा, इसीलिए उसको स्मारक बनाया गया. हाँ, इस स्मारक इसलिए बनाया गया. और ये समय पे चिन्मय साहब भाई साहब ने आके उसमें लोकार्पण करेंगे. धन्यवाद. और सजल श्रद्धा प्रखर प्रक्रिया यहाँ बनवाई है. इसके अंदर हमने 6 करोड़ 30 लाख मंत्र लेखन स्थापित किए हैं और इसके ऊपर सजल श्रद्धा प्रखर प्रक्रिया का अनावरण वही करेंगे. जसुभाई प्रजापति, खेड़ा जिला संयोजक.
राष्ट्र की चेतना को जागरूक करने के लिए शांति कुंज हरिद्वार से आदेश के मुताबिक खेड़ा जिला के कठलाल तहसील में छिपड़ी गांव में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है। इसमें 4 तारीख को यानी गई काल को इसकी कलश यात्रा थी। कलश यात्रा गोगजीपुरा से होके छिपड़ी बाजार से होके यज्ञशाला तक आई थी। तक करीबन 3 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा थी, जिसमें करीबन 6 से 7 हज़ार लोगों ने हिस्सा लिया था। अलग अलग झांकियाँ भी बनाई थी और इसी तरह कलश यात्रा को शुरुआती में खूब प्रसिद्ध प्रतिसाद मिला था। गांव में भी इतना ही उत्साह है। ये छिपड़ी गांव में आज से 42 वर्ष पहले 4 दिन रुके थे, 3 नाइट और 4 दिन। उस घर का हमने यहाँ उसी घर को स्मारक में रूप में विकसित किया है और आदरणीय चिन्मय भैया कल आ रहे हैं तो वो उसका लोकार्पण करेंगे। हमें सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा भी नई बनाई है, उसका भी लोकार्पण करेंगे। यज्ञशाला भी नई बनाई है तो उसका भी लोकार्पण करेंगे। और जो शक्तिपीठ 40 वर्षों से बनी थी उसका पूरा रिनोवेशन करके तैयार किया है। तो ये सब कार्यक्रम आदरणीय सैफाली दीदी और आदरणीय चिन्मय भैया आके लोकार्पण करने वाले हैं। मेरा नाम राजबाला ब्रह्मभट्ट है। मैं 1962 से मेरे माता पिता के माध्यम से मैं मिशन से जुड़ी हुई हूँ। ये सब महिलाएं लगभग गुजरात के 4 जिलों से आई थी, आनंद, खेड़ा, गांधीनगर और अहमदाबाद। वैसे तो पूरे गुजरात से आई थी लेकिन ये 4 जिले मुख्य थे और ये मुख्य जिलों से मुख्य बहनें आई थी। अगर पूरा गुजरात आता तो छिपड़ी में नहीं समाता।